Start करते हैं तो. Okay, so myself Pranesh, I'm having 11 years of experience in QA as a QA and mostly in automation. So UI, API, everything consists of everything. So almost 11 years now in the industry. I'm taking this classes for close to 6 to 7 years now in 3RI. So we can start with quick introduction, right? Anyone who are online? Can we have a quick introduction, please? Hello. My name is Selenium Java. I've completed computer engineering and I'm here for software testing in Selenium Java. Anyone want to go next? Good morning, everyone. My name is Akshata. I have completed BCA and I am for software testing course. Okay. Supriya, Shraddha, Prasad. Hello all, myself Supriya. I have completed my BA IT. Currently, means I was working in IT, but after career break, I want to join again. So I'm joining this Java Selenium course. Okay. Thank you. Thank you. Okay, you are Shraddha. Okay, you can go ahead. My name is Shraddha Shamamne. I have completed my BCA. Okay. Stay. Okay. I am Rajesh Tripathi. I have completed BCA and BA for software testing. Okay. This is Prasad Kulkarni. I am completed BC. Okay. So most of us are freshers, right? Out of college. Okay, nice. Okay, so सबको स्क्रीन दिख रहा है प्रॉपरली? ठीक है. I assume कि सब लोग vocal है. They will speak for themselves. If they have any doubt, I can assume that. होता नहीं है कभी. कभी कोई बोलेगा नहीं. म्यूट खुलेगा नहीं कभी कोई. So try to not be on mute unless there is some disturbance at your end. Okay. ठीक है. So what are your expectations from this course? Testing. Okay. Anything else? Getting knowledge of Java testing. Anything else? No money involved? Okay. So, so I assume you know something about manual testing, right? Why we do testing? General question. So why we do software testing? Why to do software testing? Find errors. Detect bug. Okay, as per Improving. Okay, improving. Okay, nice. So why we do automation testing then? Why automation testing is needed? Manual testing means like manually
Okay. automation में Mhm. एक certain some testings are not done by manual. We need automation. Time. Why? Time. Okay. To save time. Okay. What's next? Automation की जरूरत क्या है? Load stresses. So load testing, stress testing is different from automation testing. Objective of load testing or performance testing and objective of automation testing are two different things. So what is the objective of automation testing? Why we should do automation testing? We can do manual testing, right? So why to do automation testing? Why to invest in automation testing rather? So all of us are here wanted to learn automation testing, right? But why? Yes. टेस्टिंग में हम क्या करते हैं? We write some test cases to verify against application or requirements. Clear? Agreed? Everyone? Yes, sir. Right? So automation में हम अलग से क्या करेंगे? तो जो रिपीटेड टास्क होते हैं बहुत सारे, राइट, कि बहुत सारे ऐसे टेस्ट केसेस है जो आपको रिपीटेडली एग्जीक्यूशन जिनका करना है, राइट, तो उसमें टाइम कंज्यूम होता है बहुत बहुत, एज इन कभी कभी टेस्ट केस थाउजेंड्स में भी होते हैं. सो इट इज नॉट मैन्युअली पॉसिबल टू एग्जीक्यूट ऑल ऑफ देम. एंड ह्यूमन एरर फैक्टर जो है कि कभी कभी हम चीजें इग्नोर कर देते हैं, राइट. तो इसके लिए जो रिपीटेटिव टास्क है, इट्स बेटर टू ऑटोमेट दैट. सो ऑटोमेट करेंगे मतलब हम क्या करेंगे कि कोई टूल्स जो आते हैं, राइट, विथ हेल्प ऑफ दोज टूल्स वी विल राइट सम टेस्ट केसेस. हम टेस्ट केस ही लिखेंगे, राइट, वी विल नॉट डू समथिंग एल्स. जो टेस्ट केस हमने मैनुअल लिखे हैं उन्हीं टेस्ट केसेस को हम विल कन्वर्ट देम टू ऑटोमेट और उन्हीं को हम रन करेंगे. सो इंस्टेड ऑफ डूइंग मैन्युअली, ठीक है, तो जो रिपीटेड थिंग्स होती हैं बहुत सारी, मतलब जो टेस्ट केस हमें बार बार रिपीट करनी है, राइट, वी हैव डिफरेंट साइकिल्स. मतलब क्या हुआ कि स्प्रिंट्स आते हैं, स्प्रिंट प्लानिंग होती है जो अजाइल जिसे हम बोलते हैं. तो हर एक इटरेशन में हमें कुछ सेट ऑफ टेस्ट केसेस एग्जीक्यूट करने होते हैं, राइट. सो अगर मैं रिपीटेडली वही टास्क करता रहूंगा तो मेरा एफर्ट जो है, जो टाइम है, वो वहीं पे कंज्यूम हो रहा है. जो नई फंक्शनलिटी आ रही है उसके तरफ मेरे मेरा ये नहीं जाएगा, क्या बोलते हैं, अटेंशन नहीं जाएगा. तो उसमें जो बग्स हैं कुछ है, चांसेस की वो मिस हो जाएंगे. सो बेटर टू ऑटोमेट प्रीवियस और करंट स्प्रिंट के जो टेस्ट केस हैं वो भी हम ऑटोमेट कर सकते हैं. लेकिन द ऑब्जेक्टिव हियर इज टू रिड्यूस द टाइम it takes to test your application or test your features. Clear? Objective क्या है? The high level objective is to save time. That's it. ठीक है? So why Selenium? Selenium ही क्यों? It is open source tool. Okay. Open source. What is next? Why?
Support different platform. Okay. What is next? It support multiple languages. Anything else? It can only use to test web applications. Not only, it can be. Only. Yes. Only web applications. जो desktop applications है, for example, this Teams, Microsoft Teams, we cannot automate it unless it is web. Unless it is on web, we cannot automate it. Why? Because Selenium works with browser only. Browser के साथ ही काम कर सकते हैं. So that's why जो web पे available है, for example, Facebook का app भी आता है, right? And Facebook is available on browser as well. तो जो ब्राउजर पे है वही ऑटोमेट होगा. सिंपल. ठीक है. सो एवरीवन इज कंफर्टेबल विद जावा, क्योंकि बेसिक जावा हमें बहुत लगेगा. ठीक है. जावा के कंसेप्ट सबके क्लियर होने चाहिए. क्या क्या बचे आपका जावा में? नहीं, जावा में मतलब कलेक्शन चल रहा है. चल रहा है. ओके. सो एवरीवन इज कंफर्टेबल विद कंस्ट्रक्टर्स, इंटरफेस, local variables, global variables, access modifiers. Everyone is comfortable, right? Okay, so what is an interface? First thing to start with, what is an interface? क्योंकि यही चीजें बहुत लगने वाली है. Constructor, interface, collection framework. So what is interface? Anyone? स्क्रीन दिख रही है सबको जो ऑनलाइन है? Yes. Okay. What is an interface? Anyone? What is interface? सबका हुआ है interface, right? So what is an interface? इसीलिए मैंने क्वेश्चन पूछा कि everyone is comfortable with Java and सबका Java हो चुका है. Abstract class. No. Which contains abstract methods and So variables. So that is not what interface means. उसमें abstract class है इसलिए वो interface है. That's not a correct answer. और rather कि ये इस question का आंसर नहीं है. Yes, interface में abstract classes होते हैं, but इसीलिए वो interface है ऐसा नहीं है, right? Interface क्या है? Interviewer अगर question पूछेगा, so they might be expecting some answer, right? The accurate answer or the exact or precise answer. So what is the precise answer for what is an interface?
specify the behavior of class. Can be, but not fully correct. It defines abstract type. Interface is kind of abstraction, right? But what is interface is the answer is different. Hiding the implementation can be the answer. Hiding the implementation. Abstract रखते हैं मतलब क्या? Hide करते हैं, right? We don't show, or we don't expose the body. Abstraction, class abstraction, right? Agreed? क्लास को हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट है. इंटरफेस में जो क्लास है उसको हम बोलते हैं कि वो एब्स्ट्रैक्ट है. मतलब क्या है एब्स्ट्रैक्ट? मतलब क्या है? उसने अपना इंप्लीमेंटेशन क्या किया है? हाइड करके रखा है. सो हाइडिंग एन इंप्लीमेंटेशन इज इंटरफेस. What is the simplest example of interface other from Java? Java को छोड़ दो. Simplest example of interface. Hiding the implementation. Remember this. So what can be the simplest example of interface? लैपटॉप, मोबाइल. काम कैसे करते हैं पता है, राइट? अंदर क्या चल रहा है आई डोंट नो. की अगर मैं कोई की प्रेस करता हूं तो कुछ कहीं पे कुछ टाइप होगा या फिर कोई एक्शन हो. कैसे हो रहा है आई डोंट नो, राइट? मतलब क्या हुआ है? कैसे होगा मतलब इंप्लीमेंटेशन मुझे नहीं पता, लेकिन वो काम कैसे करता है दैट आई नो, राइट? सो व्हेन यू नो दी क्या, व्हेन यू नो द यूसेज बट डोंट नो द इम्प्लीमेंटेशन. ठीक है, सिंपलेस्ट डेफिनेशन बता रहा हूं मैं जो सबको समझेगा. व्हेन यू नो हाउ टू यूज बट यू डोंट नो कि उसका इम्प्लीमेंटेशन क्या है, दैट इज इंटरफेस. ध्यान में रखो. अंडरस्टूड? क्लियर है सबको? इंटरफेस क्या है? क्लियर? ये यस नो? जो ऑनलाइन है Yes, sir. अग्री कर रहे हैं सब लोग? दिस इज नॉट बुकिश डेफिनेशन जो बुक्स में होगी या फिर कहीं आपको मिलेगी, वैसी डेफिनेशन नहीं है, लेकिन जो हमें समझना एब्सोल्यूट नेसेसरी है, राइट? कि बिफोर स्टार्टिंग सेलेनियम इटसेल्फ इज एन इंटरफेस. सो इंटरफेस क्या है वो समझना पहला जरूरी है. ठीक है? सो इंटरफेस इज व्हेन यू नो द यूसेज बट यू डोंट नो द इम्प्लीमेंटेशन, राइट? इम्प्लीमेंटेशन हमें पता चल सकता है, दैट्स नॉट एन इशू, लेकिन जरूरी है क्या इम्प्लीमेंटेशन, उसका इम्प्लीमेंटेशन पता चले? नॉट नेसेसरी. अगर लैपटॉप मुझे यूज करना है तो कैसे यूज करना है वो अगर नॉलेज है मेरे पास, सो दैट्स इनफ, राइट? करेक्ट? तो सेलेनियम कैसे यूज करना है अगर उसका भी नॉलेज मेरे पास है, सो दैट इज इनफ, राइट? So interface is something when you don't know the implementation but you know the usage. तो इस क्लास में थ्रू आउट जो भी होगा we'll learn how to use Selenium. ठीक है? वो implement करके किसी ने रखा है. Okay, if you still interested you can go to this website, the official website of Selenium. ठीक है? This is the official website of Selenium. तो जो भी लेटेस्ट वर्जन आता है या फिर आपको जो भी डाउट होगा, जो भी आपको लग रहा है कि सेलेनियम के साथ इशू है, यू कैन रिपोर्ट एवरीथिंग हियर. यहाँ पे एक कम्युनिटी है, ओपन सोर्स. जैसे हमने बोला कि सेलेनियम इज ओपन सोर्स. ओपन सोर्स मतलब क्या कि कोई कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं है इसके साथ, लाइसेंस की जरूरत नहीं है. यू कैन यूज एवरीथिंग विदाउट लाइसेंस. और एक कम्युनिटी है
which takes care of this, मतलब जो नए वर्जन जो लाने हैं हमेशा, राइट? तो कोई सेट ऑफ यूजर्स है या फिर सेट ऑफ लोग हैं, राइट, जो डेवलपमेंट करते हैं, जो इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपरली लिखते हैं उसका। सो इम्प्लीमेंटेशन भी आपको यहाँ से मिल जाएगा कि सिलेनियम को कैसे लिखा गया है, वो भी आपको यहाँ से समझ जाएगा। ठीक है, आपको उस डेप्थ में जाना है, वेल एंड गुड, यू कैन गो एट, बट द ऑब्जेक्टिव इज हाउ टू यूज दैट इम्प्लीमेंटेशन। क्लियर? किसी को डाउट है कोई? ओके, so let's start with a quick Java test. ठीक है, क्विक जावा टेस्ट लेते हैं हम लोग। आई एम क्रिएटिंग अ क्लास। ठीक है, एवरीवन इज अवेयर ऑफ दिस। पब्लिक इज, व्हाट इज पब्लिक? Access modifier or access specifier. Class is class, right? It's a Java class entity. ठीक है, sample is name. So जब भी आप कोई क्लास बनाएंगे, मेक श्योर यू डोंट गिव एनी कीवर्ड। ठीक है, कीवर्ड हमें नहीं देना है, फॉर, इफ, ठीक है, वेब ड्राइवर, सिलेनियम, ठीक है, दीज ऑल आर कीवर्ड्स। कीवर्ड्स यूज मत करो। क्लासेस के नाम ऐसे दो कि आपको एक महीने बाद पता चले कि इस क्लास में मैंने क्या लिखा है, सिंपल। ठीक है, सो ऑलवेज प्रैक्टिस to give proper naming convention or to have a proper naming convention for your classes what you are creating. ठीक है, टाइम पास के लिए भी कर रहे हो क्लास या फिर प्रैक्टिस, तो भी प्रॉपर नेमिंग कन्वेंशन फॉलो करो। ठीक है, आई एम टेकिंग मेन मेथड। व्हाई मेन मेथड? The program execution starts from the main method. Compilation starts from main method, simple. Okay, so string a is equal to new of string. What is string? डेटा टाइप कौन कौन से जावा में? No. हाँ, string is sequence of characters, but string is not a data type. String is a class, new, right? Data type आपके हैं integer, float, double, right? वो है आपके data types. String is your class, simple, sequence of characters. ठीक है, मैं बोलता हूँ string a is equal to abc. कुछ लिखो मत, बस यहाँ पे ध्यान दो। String b is equal to new of string abc. मैंने दो स्ट्रिंग स्पेसिफाई किए, स्ट्रिंग ए, स्ट्रिंग बी, एबीसी उसकी वैल्यू है। ठीक है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ ए डॉट इक्वल्स बी एंड ए इक्वल टू बी? क्या होगा आउटपुट? ओके, फर्स्ट का ट्रू आएगा, बुलियन वैल्यू। इसका ट्रू आएगा। नेक्स्ट, इसका भी ट्रू आना चाहिए। लेट्स सी एंड लेट्स सी क्या आता है। क्या आया? क्यों? एबीसी, एबीसी तो करेक्ट है। सिंगल इक्वल टू दो या डबल? सिंगल काम नहीं करेगा, करता है क्या?
असाइन कर दिया हमने। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डॉट इक्वल्स एंड डबल इक्वल्स? ये ट्रू और ये फॉल्स क्यों दे रहा है मुझे? वैल्यू तो दोनों की सेम है, राइट? सेकेंड हम कंडीशन स्टेटमेंट के साथ यूज करते हैं इसलिए। नहीं, कंडीशन स्टेटमेंट नहीं है ये। सिंपल चीज है, देखो इंटरव्यू में यही सब पूछेंगे। सी, डॉट इक्वल्स जब करते हैं, ठीक है, तो ये डॉट इक्वल्स क्या चेक करेगा? वैल्यू। ए की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू क्या है। डबल इक्वल्स क्या चेक करेगा? ए की फाइल लोकेशन कहाँ है, जो स्टोरेज है एबीसी का, वो स्टोरेज कहाँ है, और बी का स्टोरेज कहाँ है। स्टोरेज चेक करता है डबल इक्वल्स, इसीलिए वो फॉल्स दे रहा है, क्योंकि हमने न्यू कीवर्ड यूज किया है। कीवर्ड क्या यूज किया हमने? न्यू। अगर न्यू नहीं यूज करेंगे तो ये भी क्या देगा? ट्रू देगा। कैसे? स्ट्रिंग एबीसी इज इक्वल टू एबीसी, स्ट्रिंग xyz इज इक्वल टू एबीसी। अगर मैं यहां पे लिखूं